हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इसी चैनल में सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए टोटल मैथ सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो इंजीनियर स्टूडेंट का सिलेबस टोटल सिलेबस कवर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फास्ट स्टार्ट कर रही हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल मैं आप सबको सिलेबस टोटल सिलेबस क्या है मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, बट सेम सब टॉपिक सेम है, बट जो यूनिट है वो अलग अलग होता है। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। ओके, सो you all are know about what is indefinite integral. Okay, indefinite integral means any integration that जैसे हम कर रही है integration of sin x dx, that means this is your cos x plus c. Here c is any arbitrary constant, so there is not any fixed value of c. Okay, so we cannot find any accurate value of this integration, so this is called our indefinite integral. Okay, in indefinite integral we cannot find any accurate value of this integration. Okay, so नॉर्मल इंटीग्रेशन मीनिंग क्या है ना, हमें किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने करने से जो फंक्शन आया वो है डेरिवेटिव, और उसी डेरिवेटिव से वापस उसी फंक्शन को रिपीट करने के लिए प्राप्त करने के लिए को जो प्रोसेस है उसको हमें इंटीग्रेशन कहते हैं, ये है ना। बट व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स in definite integral we find any accurate value of this integration. Okay, so this is represent as like, this is written as a to b f of x dx. Here a is your lower limit and b is your upper limit. Okay, means function is bounded by a and b, means we represent this geometrically like, sorry, we represent geometrically like draw a diagram that is your like this. Okay, this is your y-axis and this is your x-axis. So let this is a curve, that is your f of x, any function. Okay, and this is bounded by x equals to a and x equals to b. Okay, so if we find the area of this section, this region, okay, we use definite integral of this function. Okay, here we find the area of this region, we use definite integral of this one, means we write this as, represent as integration a to b f of x dx. Okay, that means we have to find area of this region. Okay, we use integration, we use definite integral. Okay, that is a is the lower limit and b is your upper limit with function f of x dx. Okay, that means this one equals to, मतलब area of the region equals to integration a to b f of x dx. Okay, this is called a definite integral. Okay, this is the use of definite integral. Okay, I hope all are clear. ठीक है, सो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ आप सब लोग जान चुके हो अभी। ठीक है, दैट मीन्स हमें किसी रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से एरिया? मतलब दिस एरिया। ओके, लाइक दिस एरिया मीन्स दिस इज बाउंडेड बाय ए टू बी. Okay, so this to find the area of this region, if use definite integral. Okay, so next we go to डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. ओके, वन इज हियर
sorry. डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड, देयर आर टू मेथड्स. Sorry, definite integral. Okay, there are two methods. One is your limit of sum. Okay, this is limit of sum method, and other is second fundamental theorem of integrals by second fundamental theorem of integral calculus. Okay, this is your limit of sum, and second is your by second fundamental theorem of integral calculus. ठीक है. So first of all we go to limit of sum. Okay, so first is our limit of sum. So what is the limit of sum? Again I draw this diagram, and I draw this graph. Okay, ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पे. तो this same diagram. Okay, so this is your x equals to a, and this is your x equals to b. So we divide this region into n equal part. Okay, we divide this region into n equal part. That means let, okay, like this, n equal part. We divide this region into n equal part. Okay, so now we have to find here this is also a definite integral. Definite integral मतलब क्या है ना, we find the area of this region. Okay, so here we so our formula is a to b f of x dx. Here we have to find area of all this part, area of all this part. There are n minus 1 part, right? There are, we divide this into n number of part. Okay, but every part there are n minus 1 number of part. This is 1 2 3 up to n minus 1 part. Okay, so that let the difference of these two, this means the space is let h. Okay, space is h. मतलब यहाँ पे हमने इस रीजन को डिवाइड करते हैं n इक्वल पार्ट से. ठीक है, so that let here this is your f of x. So if this point is x equals to a, then this is your f of a. Okay, and this is your, the difference is h, so here the function is f of a plus h. Okay, and here the function is f of a plus h plus h. That means here this function is f of a plus h means 2h. Okay, this third part is, so like this fourth part is f of a plus h means 3h. Okay, like this is your n part. So here this is write this a plus n minus 1h. Clear? So now we find area of all this section. Okay, then sum of the area of all this section is equal to total area of this section, right? So first of all we find this area. Okay, यहाँ पे मेरा स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ है, आप स्ट्रेट लाइन कर लीजिए. ठीक है, तो हाँ, दिस इज ए रेक्टेंगल्स. सो वी नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. Okay, so here width breadth is your h. Okay, so here we write h into, and length is your f of a. Okay, then plus, then area of the second section is, this is also h. Okay, into length is your, this one is f of a plus h. Okay, so this is a plus h.
Okay, then second is your also h, f of a plus 2h, right? Continue up to which term? Last is your h into this region. Okay, h into f of a plus n minus 1 h. Okay, that is your f of a plus n minus 1 h. Okay, this is not your accurate answer because look here. Okay, so ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर्व होता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कर्व है ना, ये जो फंक्शन है ये कर्व है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट यहाँ पे थोड़ा कर्व है। सो लेट, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट यहाँ पे जो है, जो पार्ट, जो रीजन है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कर्व होता है, ठीक है। बट हमारा जो रेक्टेंगल, हियर वी फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट ये भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो रीजन है ना, ये छोड़ जाता है, ठीक है। ये किसके लिए? ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये कर्व जो है ना, ये कर्व ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। मतलब हमें जैसे एक सर्कल लेंगे ना, यहाँ पे इससे एंड यहाँ पे डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस में ये क्या है? कर्व है ना। बट यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में एक ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए हमें ये जो दो लाइन है ना, इसमें हमें स्पेस जितना हाँ, जितना छोटा लेंगे तो इतना ही वहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या हो गया, सो हियर वी टेक एच इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज एच इज टेंस टू 0, ठीक है। सो दैट मीन्स we take distance of these two part is very small, okay. So that here we write that is your limit h tends to 0 of this one, okay. So now this is your accurate answer. All are clear? Okay, I'm again repeat here. In this diagram, if these two reason, if in this part this is not a rectangle in upper part, this is a curve, this is not a straight line, okay. But if the distance between these two line is very small, if the distance between these two line is very small, means very negligible, then this is your straight line and also a what? Rectangle. Okay, so we find the accurate area of this region, okay. So that here we take h, limit h tends to 0, that means the space is very negligible, then we have to find the accurate value of this definite integral, okay. So that limit, here we take limit h tends to, again I write limit h tends to 0 of h f of a plus h f of a plus 2h, continue up to h f of a plus n minus 1 h, okay. So this is our limit of sum method. I hope all are clear, okay. In limit of sum, again I repeat, in limit of sum we have, first of all,
we divide this region into n equal part, means space of all the region is all part is equal space. Okay, equally spaced, and we divide this region into n equal part. Okay, so now we find the area of all this part. Okay, then sum of this area of all this part is equals to total area of this part. But here again we write limit h tends to 0, because here there is any curve. In upper part there is a curve. Okay, look like a curve, so that this is not any accurate result. Okay, so that if we take the distance between two line is very small, if we take the distance between two line is very small or very negligible, then here we find a straight line and we find the accurate area of this region. Okay, so that here we take limit h tends to 0. Okay, so this is the accurate result of the area of this region, or accurate result of the definite integral. I hope all are clear. Okay, so now next is our second fundamental theorem of calculus. Second is your second fundamental, means second is this one. Okay, so now sorry, in second fundamental theorem there is here your definite integral is a to b f of x dx. Okay, so here let a definite normal integration of f of x is like, let this is f of x plus c. Normal integration of f of x, right? The integration of f of x is capital F of x plus c. Okay, so next we write this as, this is your lower limit and upper limit. Okay, then now in place of x we put upper limit. Okay, in place of x you put upper limit. Okay, minus in place of x you put lower limit. Okay, first of all in place of x you put upper limit, minus in place of x you put lower limit. Then now solve this equation. Then f of a minus c, so this is plus c and minus c is cancelled, so there is f of b minus f of a. Okay, so there is no any arbitrary constant. Okay, so we find the accurate value of this integration. So this is your definite integral. Okay, there is not any arbitrary constant. Okay, so normally integration in your second fundamental theorem, the integration a to b f of x dx is equals to the normal integration of f of x. You have to find normal integration of f of x. Okay, then you put upper limit in place of x minus lower limit in place of x. Let any integration, let 1 to 2 sin x dx. Let this is an example. Okay, so normal integration of sin x is here, you know that, minus cos x, right? So here lower limit is 1 and upper limit is 2. So this is minus cos 2 minus cos 1. So minus and minus is minus cos 2 plus cos 1. Okay, all are clear? So there is not any arbitrary constant. So this is the definite integral. Okay, so next we have go to the example of limit of sum. तो आज के लिए इतना ही है. तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए. ठीक है, तो आपको मेरा अच्छा लगा तो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ाई है मैंने और एक बार देख लीजिए. हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी, हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है ना, हमें किसी एरिया, किसी रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी रीजन को
कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो मेथड है टू मेथड टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल। दैट इज योर फर्स्ट इज लिमिट ऑफ सम एंड सेकंड इज योर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सो इन योर लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है? आप जिस रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, मीन्स यू हैव टू फाइंड एनी you have to find area of any region, okay, then you have to divide this area into n equal part. You have divide this area into n equal part, okay, then you have to find area of all this region. मीन्स एरिया ऑफ दिस टोटल लिमिट ऑफ सम मतलब यही है कि एरिया ऑफ दिस टोटल रीजन इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ सम ऑफ ऑल limit of sum of area of all this region, okay. So why we take here limit of this region? Because there is if the difference between these two line is big, so if the difference between two line is increased, then there is in upper part is a curve, so we do not find any accurate value of this area, okay. We cannot find any accurate value of this area, so that here we take h is very negligible. That means difference between this line is very small, okay, so that we find the area of accurate value of this region, okay. So that here we take limit h tends to 0 and then this one, okay. So in your second fundamental theorem, that is very simple. That is your a to b f of x dx equals to, only you have to find normal integration of f of x, okay, then put upper limit minus lower middle limit in place of x, okay, simply. So in next video we have to solve any example of limit of sum method, okay. So आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।